Okay, so welcome everyone. So let's start with today's webinar or workshop, we can say, that is on Python for software testing. So previously we have taken a lot of workshops on different topics like Python for ChatGPT, right? So Python, ChatGPT using Python. So then Python for web development, Python for backend development, right? So also we have taken one workshop on Python and SQL. So similarly, we are going to continue this workshop journey, right? So we had not taken a workshop on last Sunday because of Diwali week, but from now onwards, we are going to keep workshops on every Sunday, that is 7 p.m. So this webinar structure will be the same. That is, first half we will discuss everything, right? High level concepts and all, and theoretical part of the topic. And in second section, we are going to perform the case study. So there will be a practical, and today we are going to perform practical of Python and Selenium. So अगर आपको Selenium क्या है ये पता नहीं है तो आप ये webinar या workshop complete attend करो. So you will know what is Selenium and what are the testing concepts utilized in the IT industry. This is a very important topic for developers, testers, and yes, anybody who is working in IT and who want to work in IT, for both. Okay, so before starting with today's workshop, so let me provide you a brief information about TechnoDexterous platform and what we do. So as you might already know what TechnoDexterous does, but this is the practice we follow. So TechnoDexterous is a remote learning platform where we provide active live training sessions on Python. So we are live with the Python course, right? Active training section. So in this we complete Python from scratch. So if you don't know Python and you are from technical background, if you want to become confident on Python and you want to leverage the advantage of Python in your career, then we also provide live practical training sessions on weekends, right? So that your daily schedule or weekday schedule will not be disturbed, right? So on weekends we provide live practical training sessions for 2 hours Saturday and 2 hours Sunday. So this is our platform URL. So let me just paste this URL to you. So if you have not visited, you can just bookmark this from your side. I have just posted the URL in chat box. You can visit it later, post workshop maybe, and take more information on it, right? Yes, so we are also coming with other courses, and yes, in 2024 we will be live with multiple courses with Python. Like we are going to plan Python for backend developers. This will be the advanced Python course who want to become expert in backend technologies and backend development. For example, who want to play with the databases and build the new APIs, right? And build the applications on their own. So this will be, this is in progress, and we are going to launch this course in upcoming year, that is New Year 2024. Then yes, structured query language, this is the course which we are going to launch on 2024. So here we are going to cover the databases part. So what are the kind of databases, right? So SQL as well as NoSQL. So this will be also live. This course will be live in 2024, just for your information. So yes, so currently we are having active live training sessions on Python. So if you click on the training details, you will get every information what we provide and all these things, right? So we provide hands-on live practical training sessions with experienced staff members, and yes, we provide access to the platform. Basically this is the key
to our platform basically, right? We provide you the access to our platform. So in which what kind of credentials we will provide? We will provide you the login credentials so that you can log into our platform like I'm logging in, right? And there will be your course card. You will be having access to your enrolled course information. So there are 3 sections to currently Python course available, right? So first is basic, intermediate and advanced. So we cover these 3 sections in 3 to 4 months, because this is a weekend course. We cover these all the 3 sections in 3 to 4 months with basics and with live practical scenarios assignments as well, right? So in basic section we cover everything starting from the variable definition of Python to functions, so in which we cover loops and major data types of Python and all. So in intermediate section we use PyCharm and all the things, right? So I think I don't have access to this right now, but yes, so in intermediate and advanced sections we provide you the overview of how PyCharm is utilized, right? In basic section we use Jupyter Notebook. What are the different types of editors we are going to use, and then we are going to play with the different files. What are the custom modules, right? What is the difference between modules and library? Then what is exception handling? All these things will be covered in intermediate section and lot more, right? So during these live sessions you will be getting hands-on live practical scenarios to solve, and that builds your confidence and logic. So the practice is very important. So that's how the framework we have developed, so that during live sessions you will be knowing each and every concept well, and then you need to practice the live practice the practical scenarios which are provided from us. Then in advanced section we are covering almost 65 to 70% of this section using object oriented programming approach, right? So you will be knowing everything, what is object oriented programming, what is class, object, using Python, right? So because object oriented programming implementation is very necessary for if you want to become confident as a developer. So if you want to develop applications those are capable to scale, then you must know object oriented programming approach, right? And yes, so you are seeing that these are the upcoming sessions for the batch. So we had a batch today, and we so this is the this is how you join the session. So once you logged in, you will be seeing this join session button and you will be able to join that session. Okay, so yes, so overall this is the high level information. We do a lot of things apart from this. So in your so if you click on the more button, projects and internship pages are there. So we provide free of cost project implementations for final year students. Those are right now graduating, right? So we provide free of cost final year project implementation for these graduates, basically IT computer and all these things. So इसके लिए हम कुछ भी charge नहीं करेंगे, but they need to join our Python course for that. That is the condition. So the project group needs to join our Python course, right? Yeah, so this is the project page. So we provide we provide the project guidance and setup throughout the year, not only for 3 to 4 months. Throughout the year will be the support, so students can interact with us, students can raise doubt with us, right? So all these things. And so right now we have just deployed 2 projects, right? This is the Twitter clone app, and this is expenditure dashboard. Similarly, we are going to launch multiple projects which are based on Python and artificial intelligence, Python and data science,
Python and development, Python and data analytics, Python and automation, lot of things, because Python can be utilized in every domain, right? So we will be having projects, right? Python and cloud. So वो हम आगे deploy करने वाले हैं. This is just so we are discussing this page just for your information, so that अगर कोई student struggle कर रहा है to pick up the project, right? So we are here to help them, to suggest the topics and to provide advice for free of cost till the project submission. And yes, internship part. So we also provide internships to graduates. There are two kind of internships available at TechnoDexterous. One is micro and second is regular internship. So they need to stay or work with TechnoDexterous, and those are completely remote and work from home internships only. Okay, so you can just explore this platform. There are a lot of things, but due to time constraint, we won't be able to explain everything here. Yes. Yeah, so I hope the screen is visible, and we will start with the today's topic of workshop, that is Python for software testing. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so without any delay, we should start with the today's workshop. Okay, so the first slide, that is what is software testing. So anybody who is a tester join here, or who is having a somewhat kind of experience in testing, they can define software testing. Yes, anybody want to tell what is software testing? Lakshman here. Yes. Yeah. So software testing is one of the, we can say, one mechanism. We can, with the help of that, the software testing, we can check the, we can test the applications, and we can provide the quality software to the end user. Correct. So this is nothing but the software testing. So in the software testing, we can do with manual plus automation. Correct. So manually we can manually test the applications with the multiple. There is multiple testing methods available in the manual testing. So now in the market there is a automation also available. So for the regression testings, we can use the automation. So with the help of that testings, we can provide the quality software to the end user. This is the simple definition of software testing. Yes, so this is exactly, so you have explained what is software testing very well, Lakshman. There is no any specific or fixed definition of software testing, right? So here on the slides you are seeing that process of evaluating and verifying that a computer program or software functions correctly and meets the specified requirements, right? So we evaluate and verify the software functions basically. It consists of error identification, right? So what is mean by software? Softwares are nothing but computer programs. जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो या जो भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो, those are nothing but computer programs developed using, so there are multiple back end front end programming languages are available. So using any technology we can so different technologies we can develop different type of applications and we run them. So basically, for example, Zoom application we are actually using for meeting. So what is the Zoom application? Zoom application is nothing but a collection of software programs only. So that will be, those are running inside your memory, or those are running into your mobiles. That's why we are able to connect here, and we are able to sync properly, right? So if there is a bug or if there are errors, then we should be very specific with the errors. So what software tester do, so he tests the application basically. So regarding, he prepares the test cases, right? So he need to check the application behavior. So what is mean by application behavior? So let's see, let's take an example of Flipkart application. जो भी एप्लीकेशन ई कॉमर्स का हो या कोई भी यूजर सॉफ्टवेयर
या कोई भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एप्लीकेशन हो सकता है, राइट, या सिंपल वेबसाइट हो सकती है। तो कोई भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट या डिप्लॉयमेंट के पहले, मेन जो डिप्लॉयमेंट होता है उसके पहले ये प्रोसेसेस फॉलो होते हैं। कौन से प्रोसेसेस? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के प्रोसेसेस। बिकॉज इफ यू डोंट टेस्ट एप्लीकेशन देन it will be likely happen that your application may contain bugs on the production, right? bugs का मतलब errors, so एक टेक्निकल वर्ड है bug, so उसको आप errors भी बोल सकते हो if you are not familiar with the bugs, but the technical word for errors is a bug in the software industry, right? so what does that means? अगर हमें एक error find out हुआ, it is called as a bug. If there is an enhancement to the existing application, so that is called as a task, right? so for example, अभी हमने यूजर लॉगिंग का फंक्शनैलिटी डेवलप किया है, तो रजिस्ट्रेशन का एक फंक्शनैलिटी होगा, राइट, देन होम पेज होगा, देन यूजर डैशबोर्ड होगा। ये सारी फंक्शनैलिटीज क्या है? सो ये फंक्शनैलिटीज कंबाइन करके ही एप्लीकेशन डेवलप होता है। सो before making application to the live, we need to test the application thoroughly to make it live. तभी तो कुछ नॉन सो एररलेस एप्लीकेशन जाएगा और यूजर्स विल बी हैविंग अ गुड एक्सपीरियंस विथ योर एप्लीकेशन, तभी यूजर्स विल डाउनलोड या जो भी विजिट करेंगे। अदरवाइज आपका जो भी बिजनेस है उस एप्लीकेशन पे रन हो रहा है वो पॉज होगा, right? So this is the simple definition of software testing. So let's move on. So as Lakshman mentioned that there are two types of levels of software testing, that is manual testing and automated testing, right? Simple. So manual का मतलब हम खुद से मैन्युअली टेस्ट करते हैं सॉफ्टवेयर्स। सो इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जांपल लॉग इन फंक्शनैलिटी है, अगर समझो मैंने आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड दिया है, फॉर एग्जांपल लेट्स चेक द लॉग इन फंक्शनैलिटी फॉर फेसबुक। तो आपको पता है फेसबुक का यूजर नेम आपका क्या है और पासवर्ड क्या है, तो आप क्या करोगे? यू विल विजिट द फेसबुक एप्लीकेशन इनटू योर ब्राउजर एंड एंटर योर क्रेडेंशियल्स, दैट इज यूजर नेम एंड पासवर्ड। अगर करेक्ट होंगे तब वो लॉग इन होगा, राइट? तो अभी हम करेक्ट ही डालते हैं। अगर समझो बाय मिस्टेक कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुआ यूजर नेम में या पासवर्ड में, तब एप्लीकेशन क्या बोलता है फेसबुक? योर क्रेडेंशियल आर नॉट करेक्ट और यूजर नेम इज नॉट करेक्ट और पासवर्ड इज नॉट करेक्ट, टू बी स्पेसिफिक। ऐसा कुछ तो आपको रिस्पॉन्स दिखेगा पेज के ऊपर। ऐसा कैसे पॉसिबल है? वो क्रॉस चेक करता है, इसीलिए तो वो वैलिडेशन वहां पे लगा है, राइट? सो ये सारी चीजें हम मैन्युअली चेक कर रहे हैं, सो उसको मैन्युअल टेस्टिंग बोलते हैं। अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सी एक बटन है एप्लीकेशन के ऊपर, उसको क्लिक करने के बाद एक पर्टिकुलर फाइल डाउनलोड होनी चाहिए और उसमें कुछ स्पेसिफिक डेटा होना चाहिए, राइट? सो लेट्स सी we have a inventory data of multiple countries stored inside one application, and we want to download the inventory data for India. Then so you select the filter India and click on the button download, right? Then you must see the India country records only inside your downloaded records, right? अगर आपको सभी के सभी records वहां पे दिख रहे हैं, that means एप्लीकेशन का जो फिल्टर है वो वर्क नहीं हो रहा है, एंड दिस इज अ बग। क्योंकि अगर फिल्टर वहां पे दिया है तो वो वर्क होना चाहिए। सो ऐसे मैनुअल टेस्टर्स काम करते हैं। सो बेसिकली मैनुअल टेस्टिंग इज नथिंग बट चेकिंग द एप्लीकेशन मैन्युअली बाय यूजिंग इट, राइट? एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए? ये सभी यूजर के हाथ में पहले एप्लीकेशन जाने से पहले ये टेस्टर्स का काम होता है कि उसका मैनुअल टेस्टिंग प्रॉपरली करे। मैनुअल टेस्टिंग का पार्ट क्लियर है, लेट्स फोकस ऑन ऑटोमेटेड टेस्टिंग। सो व्हाट इज मीन बाय ऑटोमेटेड टेस्टिंग? सो एज अ ह्यूमन वी कैन नॉट टेस्ट द एप्लीकेशन रिगरसली। अगर वो कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटीज होगी या बड़ा सा एप्लीकेशन है और दो तो टेस्टर्स वो काम कर रहे हैं,
तो फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट स्क्रिप्ट लिख सकते हैं फॉर टेस्टिंग द एप्लीकेशन. So it might be your Linux script, it might be your Python script, which will interact with your application and do your manual testing job. So अभी के लिए अगर आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सीखना है तो आप ऑटोमेटेड टेस्टिंग के ऊपर ध्यान दो. सो इट विल रिक्वायर सम ऑफ द नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आता है तो आप थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है टू इंटरेक्ट विथ योर एप्लीकेशंस. सो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो. बेटर यू शुड लर्न पाइथन सो दैट दिस इज द मोस्ट डिमांडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज राइट नाउ एंड इट इज हैविंग लॉट ऑफ एप्लीकेशंस. अगर आपने वो अभी टेस्टिंग में भी इम्प्लीमेंट किया तो बाद में आप डेवलपमेंट में भी जा सकते हो. सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ पाइथन बेसिकली, राइट. सो testing using tools and scripts to automate the execution of test cases. So basically test case क्या होता है कि एक सिनेरियो रहता है. अगर हमें लॉगिन का सिनेरियो चेक करना है तो उसके लिए एक टेस्ट केस हम लिखते हैं. दिस इज नथिंग बट ए कंडीशन, तो हमें चेक करना पड़ता है. सो एप्लीकेशन में बहुत सारी फंक्शनैलिटीज होती है, तो उस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटीज के बारे में टेस्टर्स का काम रहता है टू राइट अ टेस्ट केसेस एंड एग्जीक्यूट. अगर वो टेस्ट केसेस फेल होते हैं तो उनको वो बग रेज करते हैं और उन ऑन दैट बग डेवलपर्स विल वर्क सेपरेटली टू फिक्स दोज बग्स. ठीक है. सो लेट्स फोकस ऑन द टाइप्स ऑफ टेस्टिंग. So there are four major types of testing basically. So there are a lot of types, but we are going to cover only 4 types here due to time constraint. So first is unit testing. Is nothing but a testing of individual functions in isolation basically. So units or functions. So any application which you are seeing or running into your system is having particular code or particular functions or units. So unit wise testing karna is nothing but a unit testing. So this is something can developer also do, right? So developers primary task is once they have developed the functionality they should perform unit testing from their side, right? unit testing का मतलब functions हमने properly develop किया है या नहीं किया है. अगर functions develop है तो उसमें 2-4 scenarios के लिए वो टेस्ट कर सकते हैं and all these things, right? So this is nothing but a unit testing. Second, integration testing. So what is mean by integration? So जब application develop होता है तब let's say backend में Python programming language है, front end में React है basically, right? So ये दो technologies है and they are running on different servers. So React एक सर्वर पे रन हो रहा है and Python Flask सर्वर पे रन हो रहा है. इसका ये मतलब नहीं है कि apart from these technologies हमें कुछ दूसरे थर्ड पार्टी रिसोर्सेस नहीं लगेंगे. फॉर एग्जांपल ईमेल का इंटीग्रेशन कर रहे हो आपके एप्लीकेशन में तो ईमेल के एपीआईज यूज करने पड़ेंगे. या लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ क्लाउड डिप्लॉयमेंट. तो अगर आपने ये एप्लीकेशन AWS पे डिप्लॉय किया है या GCP पे डिप्लॉय किया है या Azure पे डिप्लॉय किया है तो वहां पे एपीआईज रहते हैं, तो आपको वो एपीआई आपके कोड से इंटीग्रेट करना पड़ेगा. आपको आपका जो भी कोड है एप्लीकेशन का उससे वो एपीआईज इंटीग्रेट करने पड़ते हैं. बिकॉज अगर आपको वो सर्विसेज यूज करना है तो आपको इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा. जो भी एक्सटर्नल सर्विसेज हम एपीआई से या कुछ डेटाबेस सर्विसेज या दूसरे एप्लीकेशन को इंटीग्रेशन किया है हमारे एप्लीकेशन के साथ, अगर वैसा रहता है तो उसको इंटीग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं. तो आपको वो भी टेस्ट करना पड़ता है. सो दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन टेस्टिंग. सो फॉर एग्जांपल ईमेल सर्विस हम यूज कर रहे हैं या दूसरा एप्लीकेशन का एक एपीआई हमने इंटीग्रेट किया है तो वो दूसरे एप्लीकेशन का एपीआई हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग. सो ये आप ऑटोमेटेड वे में भी कर सकते हो या मैनुअल में भी कर सकते हो. सो ऑटोमेटेड वे में आई थिंक जेमीटर इज द टूल, राइट? प्रोट्रैक्टर्स इज द टूल. सो देर आर टू टूल्स, एक जेमीटर एंड दूसरा प्रोट्रैक्टर है. तो ये एपीआई एंड यूआई टेस्टिंग के लिए यूज होते हैं बेसिकली. एंड yes, so if you want to test the APIs then Postman is also
फेमस टूल. सो अगर आपके पास एंड पॉइंट्स है, ऑथेंटिकेट और ऑथेंटिकेशन भी आपको पता है, तो आप उस एपीआई को डायरेक्टली हिट कर सकते हो यूजिंग द पोस्टमैन. सो पोस्टमैन इज आल्सो अ एपीआई टेस्टिंग टूल, सो यू कैन यूज दैट. थर्ड वन, सिस्टम. सो सिस्टम का मतलब पूरा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करना है विथ इंटीग्रेटेड एंड कंप्लीट सॉफ्टवेयर. सो ये तो हमें करना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर आप कंप्लीट सॉफ्टवेयर नहीं टेस्ट करोगे एट द टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट, सो इट विल break. Some of the functionalities might break because of the development or enhancement to the application. इसीलिए complete system से testing is also important. Fourth is acceptance testing. So what is mean by acceptance? अगर समझो हमने from scratch एक application बनाया है and we need to satisfy the user acceptance criteria. So उसके लिए हम user से भी एक UAT परफॉर्म करवा लेते हैं, सो दैट यूजर से, एंड यूजर से या जो भी क्लाइंट है उनसे भी एक यूएटी करवा लेते हैं, सो दैट क्लाइंट विल कंफर्म, यस मैंने जो बोला था वैसे ही आपने सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन डेवलप किया है. सो दिस इज माय एक्सेप्टेंस दैट and I accept this application. So we are going to perform today's case study using Python and Selenium package. So Python का सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में या ऑटोमेटेड टेस्टिंग में कैसे यूज होता है वो डिस्कस करने वाले हैं. सो वी आर गोइंग टू परफॉर्म द वर्कशॉप, लाइव वर्कशॉप ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पाइथन विद सेलेनियम, एंड वी आर गोइंग टू log into our platform only automatically using Python script. So it will be a really fun. So you will enjoy this workshop because ये हम automatic login करने वाले हैं हमारे अकाउंट को using Python and Selenium. Yes, so we have seen some information about software testing. So there are two levels of software testing. One is manual and second is automated. So manual testing के कुछ सब types नहीं है, because manual is itself a manual. So you need to test it rigorously, and there are some lot of limitations to the manual testing, right? So you cannot test if the application architecture is complex, then you cannot test the overall application with the manual flow. And yes, so as a human, so we might make some mistakes, right, knowingly or unknowingly. So what are libraries we are going to use for Python to perform the software testing using Python? Python is a popular choice for automated testing, because if you want to know how Python is being used in testing side, then this is the page for you. If you want to know how you can use your Python knowledge to implement your test cases basically. So there are three libraries on the screen which you are seeing here: unit test, PyTest and Selenium. So you can use them with your Python code to perform multiple types of testings, right? It is having a lot of libraries. Because of that, it makes user to understand the flow of the testing, because Python programming is very simple to understand, right? So, and also very simple to implement as well. If you are clear with your logic, then you will be set to implement the logic, right? So it is the easiest language available right now, we can say, to learn. Most demanded language of computer programming basically, right? So there are these libraries: unit test, PyTest and Selenium. So what is mean by unit test? So unit test is a built-in library in Python you can use for performing or implementing unit testing into your Python scripts. If you know the CI/CD pipeline, so if you are aware of CI/CD pipeline, there is a concept of continuous integration, continuous deployment. There is a term DevOps. So this is the process of DevOps basically, and inside that there are steps. So अगर आपको continuous development and continuous deployment pipeline set करनी है, तो there is a one step of unit testing. So there are two steps. One is writing
your application logic and also writing unit test cases for against those logic, right? So what is mean by unit test cases here? Unit test cases means it is, those are the nothing but a test cases written for testing your Python functions, and that's where the unit test library comes into picture. So अगर आपने कुछ लॉजिक लिखा है और वो लॉजिक आपको या वो फंक्शन या पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में बहुत सारे फंक्शन है वो टेस्ट करने हैं, तो आप यूनिट टेस्ट केसेस लिख सकते हो जो जो कि पाइथन में अवेलेबल, सो पाइथन में ही आपको इम्प्लीमेंट करना है. So this is a short implementation, short description of unit test. So you can explore this library later. Second is PyTest. This is the most demanded library for testing. So it is having very huge demand in the current scenario, because it is a very flexible library for सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. सो सभी टर्मिनोलॉजीज हम टेस्ट कर सकते हैं, यूएन डेटाबेस, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, एपीआई टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, एवरीथिंग. So it is having lot of plugins basically, and it enables us to implement the different kind of test cases in different areas basically, and that's where the PyTest is the most famous and popular framework for Python. So अगर आप टेस्टर हो तो PyTest अगर आपको आता है, so this is a very good point, so you for improving your career, right? And yes, Selenium. So Selenium is a library, so it is a common, so you can use Selenium with Java, you can use Selenium with Python as well, right? So there is a Python library available for Selenium. You can just install Selenium using pip install and use that library for implementation. So what is Selenium? Selenium is a very good tool for automated testing of UI. So front end के लिए टेस्ट करने के लिए Selenium is the better tool available, and it is the best tool basically available in the market. This is open source, you can just install it and use for your personal testing purpose as well, or practice purpose as well. So what is the case study here? We are going to log into our platform itself, right? So this is our platform login page, right? तो हम क्या करने वाले, we are going to use simple Python script with Selenium and going to log into our platform. So for example ये हम मैनुअल करते हैं, right? So यूजर को यूजर नेम एंड क्रेडेंशियल्स पता है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड, यूजर नेम एंटर करेंगे मैन्युअली एंड पासवर्ड मैन्युअली एंटर करेंगे. लेकिन अगर आपने ऐसा स्क्रिप्ट लिख लिया, आपको डायरेक्ट आपका होम पेज ही दिखने लगा, तो दैट इज फैसिनेटिंग, राइट? सो वही हम आज परफॉर्म करने वाले हैं. सो वी आर गोइंग टू ऑटोमेटिकली लॉग इन टू आवर प्लेटफॉर्म. तो इसके लिए आपको क्रेडेंशियल्स लगेंगे. सो वी आर गोइंग टू यूज वन ऑफ मेंबर्स क्रेडेंशियल बेसिकली, and we are going to perform this activity, right? So this is the subject of our case study. So हम automatically एक सिंगल क्लिक में लॉग इन करके हमारे यूजर के होम पेज पे जाएंगे. This is our target. Okay, I hope you got this concept. So we are going to perform, so we are going to write a script. So already script is already written, right, in the background. So I will explain what it does, and we will going to execute that script so that it will directly open Chrome browser. It will directly open the URL inside the Chrome browser. So ये URL जो भी login का URL होगा वो open करके it will directly put username. हम सबको दिखने लगेगा basically, because Chrome is being handled by the software that is called as Selenium. So Selenium का यूज करके हम Chrome का ऑटोमेशन कर सकते हैं. दिस इज द प्लस पॉइंट. दैट्स व्हाई ऑटोमेटेड टेस्टिंग में Chrome या Selenium लाइब्रेरी पॉपुलर है. Sir, I'm not visible your screen actually. Yes. So right now I have shared. Yeah, is it visible? Yes. Yes, sir. Yes, it's visible now. Yes. So this is our login.py script which we have written in Python. हमने बैकग्राउंड में Selenium install किया है. Selenium is a package which you can directly install before
using Selenium, because this is a third party package. We need to install it, but it is open source, you can install, right? So there is a command pip install Selenium. With the help of that you can install Selenium with your Python, right? And you can use that. So वही हमने install करके हमने use किया है. So what are the packages we are imported? First is WebDriver, second is keys. So what is mean by keys? Keys का मतलब हम Selenium का पैकेज, so Selenium का keys मेथड यूज करके हम जो हमारा पेज है, so what is the page basically, let me show you the page as well. So this is the login page, right? And यहाँ पे already password और यूजर नेम सेट हुआ है, but ये हम नहीं यूज करने वाले. Actually we are going to log in with one of our candidate credential itself. So this is a login page, right? इसमें अभी हम मैन्युअली, जैसे अभी फॉर एग्जांपल कुछ भी यूजर नेम होगा तो यूजर नेम हम यहाँ पे @समथिंग मैन्युअली टाइप करते हैं और पासवर्ड टाइप करके हमें ये लॉगिन बटन क्लिक करना पड़ता है. उसके बाद ही वेलकम एडमिन या वेलकम यूजर मैसेज हमें दिखता है. मैसेज इन द सेंस वी आर एबल टू log in successfully, that means like this. So we once we click on login, then it will show us welcome admin, right? And this is the user dashboard basically. So हम एक कैंडिडेट का यूजर नेम पासवर्ड यूज करने वाले हैं, राइट? एंड वो यूजर नेम पासवर्ड हमारे कोड में मेंशन है. यहाँ पे ये देखो, ये है यूजर नेम एंड दिस इज द पासवर्ड, ठीक है? सो हम लक्ष्मण का लॉग इन करने वाले हैं यूजिंग दिस पाइथन स्क्रिप्ट. ये कैसे पॉसिबल है, राइट? सो दिस इज अ मैजिक विच वी आर गोइंग टू परफॉर्म टुडे. सो अगर कोड समझ में नहीं आता है दैट इज कंप्लीटली फाइन, लेकिन हम क्या करने वाले हैं ये अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको पूरा एक्टिविटी समझ में आएगा कि हमने एक पाइथन का सिंपल सा कोड लिखा जो कि क्रोम में हमारे लॉगिन पेज ओपन करेगा. यहाँ पे लॉगिन पेज का यूआरएल है, राइट? अगर ये यूआरएल हम मैन्युअली कॉपी करते हैं एंड आई विल विजिट क्रोम एंड ये यूआरएल हम मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो मुझे लॉगिन का पेज आएगा बेसिकली, करेक्ट? तो इसीलिए हमने वो यूआरएल वहाँ पे दिया है सो दैट हमें पहले क्या करना है. सो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ ड्राइवर ऑब्जेक्ट. सो ये क्या करता है, क्रोम का ड्राइवर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है. सो ड्राइवर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद सो वी नीड टू प्रोवाइड द यूआरएल basically. So navigate to the login page of the website. So this is nothing but our platform URL, right? जहाँ पे login का पेज है. So we are going to provide this. So once we provide this, what this driver object do? It will open. यहाँ पे ही वो Chrome का instance open करेगा. Then it will put this URL into that Chrome instance. Then what it will do? It will find these elements. So कौन से एलिमेंट लगेंगे लॉगिन के लिए, कौन बताएगा? लॉगिन के लिए कौन से एलिमेंट लगेंगे? एलिमेंट इन द सेंस क्या लगेगा लॉगिन करने के लिए? सिंपल, यूजर नेम और पासवर्ड, राइट? यस, यूजर नेम एंड पासवर्ड, करेक्ट. तो जब वो इस पेज पे आएगा, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ये यूजर होम, ये जो भी यूआरएल है, राइट? ये यूआरएल हिट करेगा वो और इस पेज पे आएगा. तो इस पेज पे आने के बाद उसको यूजर नेम एंड पासवर्ड लगेगा टू लॉग इन, राइट? दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइड किया है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस दो लाइंस पे क्या हो रहा है? दिस इज नथिंग बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग कौन सा ऐसा एलिमेंट है उसका नाम, या हम उस पर्टिकुलर यूजर नेम का एलिमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, पासवर्ड का एलिमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं. तो पासवर्ड का एलिमेंट आपको कैसे मिलेगा? तो इसके कोड से मिलेगा. तो कोड कैसा है? ये दिस इज नथिंग बट HTML पेज. तो इसको अगर हम इंस्पेक्ट करेंगे तो हमें HTML का कोड दिखेगा इस कंटेनर के अंदर, ठीक है? तो इसमें अभी हम फाइंड आउट करेंगे उस टैग का, बेसिकली कौन से है इसका यूजर नेम और पासवर्ड के लिए कौन सी ये है, कौन सा नेम है बेसिकली उस टैग का, पर्टिकुलर टैग का. सो वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? यहाँ पे हाँ, इस कंटेनर में वो होगा.
करेक्ट। तो हमने फॉर्म साइनिंग के अंदर गए, यहाँ पे हाँ ये देखो इनपुट ईमेल, ये अगर यहाँ पे मैं ड्रैग करूँ तो देखो इस पे लेके जा रहा है, दैट मीन्स यहीं पे वो कुछ तो टैग है। कौन सा टैग है? इनपुट टैग होता है यहाँ पे। तो इनपुट टैग में उसका नाम क्या है? यू नेम, करेक्ट। एंड उसके बाद पासवर्ड, पासवर्ड का क्या है? यू पास, ठीक है। ये टैग नेम हमने यूज किया है सो दैट हम ऑटोमेटिकली इस पेज को लॉग इन कर पाए, ठीक है। तो ये यू नेम और यू पास हम क्रोम ड्राइवर को बताएंगे कि दीज आर द टैग्स। तो आपको क्या करना है, वो टैग्स के जो एलिमेंट है ना उसमें ये वैल्यू डाल दो। सो व्हाट इज दिस वैल्यू? दिस इज नथिंग बट यूजर नेम का वैल्यू है, पासवर्ड उसी यूजर का पासवर्ड है, ठीक है। सो वंस दिस इज एग्जीक्यूटेड, ये क्या करेगा बेसिकली, ये उस इनपुट फील्ड में ये यूजर नेम और ये पासवर्ड रखेगा। एंड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो हिट, सो इट हिट्स द सबमिट बटन। सो सबमिट बटन क्या है? लॉगिन, ठीक है। तो अभी वही हम एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं। तो उसके पहले हम कुछ प्रिंट स्टेटमेंट हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रोम ड्राइवर क्रिएटेड, उसके बाद क्या है, हाँ तो यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट डालेंगे, लॉगिन पेज ओपन, OPENED ओपन, यूजर नेम एंड पासवर्ड सबमिटेड, ठीक है। तो ये आपको यहीं पे दिखेगा एक्चुअली आउटपुट, ये आउटपुट यहीं पे दिखेगा, यहीं पे इन द सेंस इस पे कंसोल, इसी कंसोल पे। तो ये यूजर नेम एंड पासवर्ड सबमिट कर दिया हमने। और ये क्या है? टाइम डॉट स्लिप। हम 15 सेकंड के लिए वहां पे वेट करेंगे और ये ड्राइवर क्विट करेंगे। सो ड्राइवर क्विट करने के बाद वो ऑटोमेटिक आपका क्रोम ब्राउजर क्लोज करेगा। सो दिस इज द वेरी बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ सेलेनियम। सेलेनियम के पास बहुत कैपेबिलिटीज है। क्रोम हम जैसे मैनुअल यूज करते हैं ना, वैसे ही सेलेनियम और पाइथन के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबमिटेड के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसके बाद यूजर लॉग्ड इन, क्रोम ड्राइवर एग्जिटेड, ठीक है। तो ये हम यहीं पे जब हम ये कोड एग्जीक्यूट करेंगे तब यहीं पे ये आउटपुट में दिखेगा। लेकिन अभी आप क्लोजली ऑब्जर्व करो, जब मैं ये प्रोग्राम रन करने वाला हूँ करने वाला हूँ तो ये ऑटोमेटिक क्रोम ओपन होगा आपके सामने, देखो अभी। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम, मैंने रन किया, राइट। तो अभी यहाँ पे आपको ये प्रिंट स्टेटमेंट यहीं पे दिखेंगे। और एक हाँ ये देखो यहाँ पे क्रोम ओपन हुआ है, करेक्ट। सो क्रोम ओपन होने के बाद, सो लेट मी जस्ट टेक इट बिगर, देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, उसने लॉग इन कर लिया है। यस और नो? यस, इज इट विजिबल? यस सर। यस। सो यहाँ पे 10 सेकंड के लिए वो पॉज हुआ, ठीक है। और यहाँ पे आपका प्रोग्राम देखो क्या बोल रहा है, क्रोम ड्राइवर क्रिएटेड, लॉगिन पेज ओपन, उसके बाद क्या है, यूजर नेम पासवर्ड सबमिटेड, यूजर लॉग्ड इन, क्रोम ड्राइवर एग्जिटेड। फिर से हम परफॉर्म करें, सो लेट्स रन दिस, और फिर से वो ओपन करेगा क्रोम। देखो यहाँ पे ओपन किया, वहां पे मैसेज देखो, क्रोम इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय ऑटोमेटेड टेस्ट सॉफ्टवेयर विच इज सेलेनियम। यस। सो दिस इज द शॉर्ट केस स्टडी ऑन ऑटोमेटेड टेस्टिंग। सो इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट हम सब कुछ यहाँ पे ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बट आई होप दिस केस स्टडी हेल्प यू टू एक्सप्लोर मोर ऑन सेलेनियम, बिकॉज सेलेनियम इज हैविंग लॉट ऑफ कैपेबिलिटी। जो हम मैन्युअली क्रोम ब्राउजर पे करते हैं वो सब कुछ ऑटोमेट कर सकते हो आप। समझो आपके पास अकाउंट है 10 अकाउंट, 10 अकाउंट में आपको लॉग इन करना है मैन्युअली, और मैन्युअली लॉग इन करने के बाद
उसका डेट रेंज डालना है और डेटा निकालना है, क्योंकि आपको एक एनालिसिस रिपोर्ट बनाना है. दिस इज कॉल्ड एज पूरा मैनुअल वर्क. 10 अकाउंट का 10 बार आपको डेट रेंज डालना है, 10 बार क्रेडेंशियल्स डालना है. सो ये क्या हुआ फिर, राइट? उसको फुल्ली ऑटोमेट कर सकते हो और यहाँ पे कुछ एरर भी नहीं आएंगे. मैनुअल में एरर पॉसिबल है, गलती से कुछ डेट इधर उधर हो गया तो आपका डेटा मिसमैच हो सकता है. लेकिन क्रोम में सेलेनियम और पाइथन के साथ अगर आपने परफेक्ट कोडिंग किया एंड इफ यू एग्जीक्यूटेड द स्क्रिप्ट, तो ये कहीं पे भी एरर नहीं आएगा, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज ऑटोमेटेड टेस्टिंग. सो बहुत कुछ पॉसिबिलिटीज है, बट यहाँ पे हमने सिर्फ एक सिंपल पीओसी यहाँ पे किया था, सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग आए कि ऑटोमेशन क्या होता है. Thank you for attending this workshop, and we will see you next weekend at same time with the brand new topic of Python with other domain basically. So these are knowledge sharing sessions you can attend. So आपको क्या करना है, just one time pre registration करके रखना है हमारे platform पे, so that you can attend those workshops again and again. And yes, so let me know if you are interested for Python learning. So we keep live training sessions on every weekend, Saturday and Sunday. 2+2 hours के लिए होता है. So this is a 3+ months course, and we provide live practical training sessions with assignments, and live practical scenarios are discussed during the sessions. Yes, so that's it, and thank you very much.